Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23421050 and 23310464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 डायल करना ना भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। Warm welcome, Sneha. Thank you. और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Make in India initiative has turned India into a manufacturing hub, says Prime Minister Modi. Foreign investors pump in over 57,000 crore rupees into the Indian equities market so far in September. And Commerce and Industry Minister Piyush Goyal stresses that Brand India is as important as Make in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान ने भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया। सितंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में किया लगभग 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ब्रांड इंडिया मेक इन इंडिया जितना ही महत्वपूर्ण है। Prime Minister Narendra Modi has said that India has become a manufacturing powerhouse due to the Make in India initiative. He said the poor, the middle class and MSMEs are getting a lot of benefit from this campaign, and it has provided an opportunity to people of every class to showcase their talent. Addressing 114th episode of Mann Ki Baat, the Prime Minister highlighted the success of Make in India initiative, saying that success of this campaign includes the contribution of the country's big industries as well as small shopkeepers, benefiting every sector, boosting exports and attracting foreign direct investment. He said the government is focusing on quality of the products and pitching for vocal for local. Pointing towards the changing dynamics of jobs, the Prime Minister said the nature of jobs is changing with the emergence of new sector. He said the Ministry of Information and Broadcasting has started 25 challenges under the theme Create in India in order to promote talent and creativity. जी, इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं योगेश। योगेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछें अपना। हेलो हेलो जी योगेश जी, अपना सवाल पूछें। जी, आप सभी को नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी के टाइम पे वैसे तो हम डाइवर्सिफाइड फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप आते हैं। इसके अलावा हमारे कोर पोर्टफोलियो के अलावा सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए क्या आप कोई दो ऐसे सेक्टरल फंड सजेस्ट कर सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर स्कोप ग्रोथ का दिखता है? दूसरा, ये थीमेटिक में और सेक्टरल फंड में क्या डिफरेंस? जी, सो योगेश जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये अच्छे से समझ आता है कि कोर के लिए हमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स ही लेने चाहिए। जहां तक सैटेलाइट की बात है,
तो ये आपका बात एकदम सही है कि जो सेक्टर और थीम स्पेसिफिक होते हैं वो आपके सैटेलाइट हो सकते हैं फंड के, बट कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, कब अच्छा करेगा, इस चीज का एक जो फ्यूचर प्रिडिक्शन होती है वो मैं इस मतलब मेरे पास इसकी जानकारी नहीं रहेगी कि कौन सा अच्छा करेगा कौन सा नहीं करेगा। आप इस हिसाब से जरूर देख सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर थीम में आपको लगता है कि इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है या फिर इसका आप थोड़ा सा हिस्सा चाहेंगे आपके पोर्टफोलियो में हो, जो आपके कोर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स अभी आपको नहीं दे रहे हैं, इसका आप थोड़ा सा एनालिसिस करके वो थोड़ा सा सेक्टर या थीमेटिक फंड को ले सकते हैं। बट वही ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बड़ा ना हो जाए आपके पोर्टफोलियो का परसेंटेज एलोकेशन। जहां तक बात है कि सेक्टर और थीम फंड्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वो ये हो जाता है कि सेक्टर स्पेसिफिक फंड किसी एक सेक्टर पे फोकस्ड रहेगा और थीम का मतलब हो जाता है कि कोई एक थीम है, जैसे कोई समझ रहा है कि मान लीजिए रियलिटी नहीं, मान लीजिए कोई कंजम्पशन थीम है जैसे, तो वो जो कंजम्पशन फोकस्ड कंपनीज हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करेगा मेजॉरिटी। बट सेक्टर वाइज ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई सेक्टर हो जाता है एनर्जी जैसे सेक्टर हुआ, इंफ्रा और हो गया, सस्टेनेबिलिटी जैसे थीम हुआ, राइट। सो टेक जैसे सेक्टर हो जाएगा। Is there a limit to the number of the amount that can be kept in these funds, or is it's as much as you want to invest in them? Absolutely. There is no such number that you can invest in any kind of a fund, of course. But where the limit comes is from the fact that it has to be a smaller portion of your overall portfolio. Okay. Ideal amount कितना होना चाहिए? Actually, there is no ideal amount as such to be invested. You can actually look at it this way. अगर आपका पोर्टफोलियो 100% कंप्राइज करता है तो उसका 5 to 10% आप किसी सेक्टर या थीम में रखने का सोच सकते हैं। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको समझ आता है कि ये सेक्टर क्या करता है, आपके पैसे किस टाइप की कंपनीज में लगे हुए हैं, and you are there for the long haul, because at the end of the day ये equity funds होते हैं। So Snehal, there is momentum and alpha funds that we were also discussing a while back. Are they better than even the small cap funds, because the investor interest rises as these strategies handsomely beat the small cap index in the last 12 months? So where should I go? Absolutely. So one thing that I would like to mention here is that as the name suggests, momentum and alpha, these kind of funds which are known as factor based funds, the factors being momentum and alpha in this particular case, they are driven on the fact that a stock running with a high a stock showing high price momentum will keep on rising. So momentum indices actually select stocks with the strongest price movement over the last 6 to 12 months. So the near term price appreciation is what they factor in. And alpha funds on one hand focus on stocks that consistently generate excess returns over their market benchmark, let's say. Now, while it sounds impressive that there are funds which are sort of beating a fund like small cap as well, but what one has to be mindful of, that high returns comes with high volatility. There is no free lunch in the equity market landscape. So when it comes to factor-based funds, they are still very novel as a concept in India, and they are finding so many takers because we are in a bull market phase, and these kind of funds have not really seen a downside of the market, which the core diversified equity funds have seen. So like I was mentioning for sectoral and thematic funds, if you believe in this particular story that factor-based funds are here to stay, in that particular case, a satellite exposure to these kind of funds cannot really be a no at all. But again, all these aspects should be more driven by first covering what your investment framework needs to be covered in terms of your goals. Okay. And then maybe your play or fund allocation can be with these kind of funds. Sneha, we'll continue our conversation in a while. And in the meantime, we'll take up our next caller from Kolkata, Animesh. A warm welcome. Please go ahead and ask your question. Good evening, sir. Good evening. I have two questions for you. Yeah. How many shares can one senior citizen purchase at a time? And can one, particularly senior citizen, go in
for equity share? Would it be profitable for a senior citizen to purchase equity share? Thank you, sir. Is there a limit? I don't think there is. Not in my knowledge. So I can't really say a yes or no, absolutely a yes or no to that. But to my knowledge, there is no such limit for any kind of Indian resident, so to say. Yeah. Be it a senior citizen or not. Except for the post office, in which right. 30 lakhs is something that you can. But I guess sir was talking more about equity shares. जी, right. बिल्कुल. So वहाँ पे तो लिमिट नहीं है. जहाँ तक बात है इस चीज की कि equity shares में invest करना, is it safe or not for a senior citizen? Then I would say shares में invest करने के लिए you need a kind of a temperament that you do not get sleepless nights when you sleep with the fact that shit market went down and your portfolio would be red tomorrow morning. If that kind of you get anxious thinking about these things, then mutual fund is a much let's say sane route to that kind of ups and downs. For even a senior citizen, we have categories and funds like equity savings fund, which keep about 30% in equity shares and the rest being a kind of a derivative exposure or debt kind of exposure. So you get the equity highs and lows, and you're also able to add or get the steady income stream that a senior citizen usually requires. So what are passive funds? Right. So you mentioned a while back. Yeah. Passive funds that we are talking about. So we have two kind of paths to investing, one being active and one being passive. You either put your money on fund managers and pay them a higher fees, which are the active funds, to generate that alpha, or you simply invest in an index fund, which kind of replicate what the market is offering to you in general. Okay. So those would be passive funds where fund manager decision making does not really come into play. जी, और अब रुख करते हैं जयपुर का. जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र. जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछें अपना. हाँ. अच्छा मैडम, ये पूछा था कि जैसे स्टॉक में या आईपीओ में हम लोग तो सर्च कर लेते हैं कि प्रॉफिट है सब देख के कि कौन सा ठीक है, कितना ये है. अगर दो फंड का हम कंपेयर करें, दो फंड हाउस का, जैसे लार्ज कैप कोई ले ले जो निफ्टी 200 को ट्रैक कर रहा है, तो अगर ऐसा दो लेके हम स्टडी करें तो उसमें क्या क्या चीज देखेंगे, कौन किससे बेटर है, एयूएम साइज या क्या क्या चीज बताएं थोड़ा. जी, तो यहाँ पे आप जो कंपैरिजन का आपने एग्जांपल दिया था वो आप एक इंडेक्स फंड के लिए देख रहे थे. तो अगर दो फंड्स एक ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं तो उनमें ज्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं, स्पेशली एट अ पोर्टफोलियो लेवल. सो सेक्टर लेवल, डाइवर्सिफिकेशन लेवल, एसेट एलोकेशन लेवल, ऐसे किसी भी पैरामीटर पे आपको किन्हीं भी दो फंड्स जो एक ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं वहां डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये एक ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं तो उनका पोर्टफोलियो वही रहेगा जो उस इंडेक्स का पोर्टफोलियो है. तो यहाँ पे कंपैरिजन एक्सपेंस रेशियो के पर्टेनिंग आ सकता है और एयूएम के पर्टेनिंग आ सकता है. एक और इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है वो पैसिव फंड्स के लिए स्पेसिफिकली हो जाती है ट्रैकिंग एरर, जो बताता है कि वो फंड उस इंडेक्स को कितने अच्छे से ट्रैक कर रहा है या मैच कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस. बट वैसे अगर आप जनरली किसी और एक्टिव फंड्स का भी कंपैरिजन करना चाहे तो आप वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे एक टूल है फंड कंपेयर का, उसका उपयोग कर सकते हैं, जो पोर्टफोलियो लेवल और बेसिक रिटर्न्स परफॉर्मेंस के लेवल पर भी कंपेयर करता है फंड्स को. जी, और अब हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं रितेश. रितेश जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछिए अपना. लॉस्ट टच स्पर्श विद रितेश. I think there's a question that Ritesh has asked for. How should one avoid overlapping of funds and how to identify that you have overlapped? Right. So, overlapping of funds basically हो जाता है that there is a duplication of stocks, right? And this duplication actually cannot really be avoided if you are investing in more than one fund, because at the end of the day, let's say if we pick up any large cap fund, it has to adhere to the top 100 stocks that there are in the market. So वो 100 का आपको exposure उन funds में मिलेगा ही. आप एक point जो होता है जो आप ध्यान रख सकते हैं to avoid और sort of minimize the portfolio overlapping, that would be कि आप different AMCs के funds का अपने portfolio में उपयोग कर सकते हैं, because
generally every AMC comes up with their own kind of investment framework. They have their own kind of rules pertaining to which particular stock to include, which to exclude. But this is more broadly beyond the large cap space. Mid and small and जो diversified funds हो जाते हैं जहाँ पे mid small का थोड़ा exposure रहता है, वहाँ पे ये चीज अगर आप more than one AMC में invested रहते हैं तो वो चीज थोड़ी सी minimize हो सकती है. और बाकी आप इसका ध्यान रख सकते हैं कि आपके पास लार्ज मिड स्मॉल हर टाइप की कंपनी का एक्सपोजर है वाया ऑफ कोर्स द फंड स्ट्रक्चर्स ओनली. और वैसे आजकल ऑनलाइन पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल भी आपको मिल जाता है जहां पे आप अपने फंड्स डाल के देख सकते हैं कि कितना काइंड ऑफ ओवरलैप है इन पर्टिकुलर फंड्स में. जी, अभी फंड कंपैरिजन की आपने बात करी, हमारे श्रोता ने भी सवाल रखा था. तो कई दफा निवेशक जो है 3 साल या 5 साल या फिर 1 साल का रिटर्न को कंपेयर करके म्यूचुअल फंड चुनता है और अधिकतर जो रिटर्न्स देखे गए वो देखे गए मिड कैप और स्मॉल कैप में. ये ग्रोथ चलती आई क्या, लेकिन ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहने की संभावना है मिड कैप और स्मॉल कैप में? तो जहां तक संभावना की बात है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है कि जो कंपनीज आज छोटी हैं या तो वो आगे जाके बहुत बड़ी बनेंगी या तो वो आगे जाके एकदम ठप हो जाएंगी. तो जो ग्रोथ का एक प्रॉमिस होता है वो इनमें ज्यादा ही रहता है क्योंकि इनके पास अभी ग्रोथ का लीवे रहता है. दे आर पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज सच एंड देयर इज अ परसेप्शन दैट दे विल कीप ग्रोइंग. इसीलिए हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि मिड एंड स्मॉल कैप का रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा रहता है. बट देन दिस ऑल्सो रिमेन्स अ फैक्ट दैट रिस्क इज ऑल्सो हायर देयर. So, Sneha, we were talking about the factor-based funds and as I understand, factor-based funds pick stocks based on certain factors that have helped deliver superior returns in the past. And currently, I believe there are 4 factors which are prominent for investment in India. We would like you to elaborate on them, along with the fact that can these factor-based funds dethrone the large cap funds? Okay. So, one thing is that when it comes to the large cap funds, like you mentioned, since 2019 there has been this is now coming up as more of a fact that in the large cap domain, active funds have kind of lost their plot when it comes to beating the passive funds, because what they have to achieve is, first of all, they have expenses to cater to, and then it comes down to the fact that they have to not just match the performance of passive funds, but also go beyond them and then outperform the passive funds. So, when it comes to factor-based funds, like you mentioned, there are 4 prominent factors that are right now making the rage. These are actually momentum funds, which we referred to earlier. Then there would be value funds, which try to look out for underperforming or out of favor stocks, and something like where you can say there is relatively low value. And these are actually determined by a few models that AMCs run. So, a superior dividend yield or a low PE ratio are the factors that value funds look at. Then we have quality funds, quality factors. These are funds which are focused on picking quality stocks in terms of their profitability and stable earnings. Then there are low volatility funds as well, where funds look to invest in companies where the price swings are fewer. So these kind of factors are doing their job right now, and they are all the rage, as I mentioned. When it comes to the performance aspect of these funds, so when you compare these, actually momentum and value-based funds have delivered impressively well since their launch, kind of above large cap funds like you mentioned. But again, every kind of a factor has its day. This time this combination is working, and maybe in the long term this works. But like I mentioned, they are too novel a concept. Right now, these indices are being created. A few of these indices are so new that they were just created like 2 years back. But large cap funds have been there, right? They have seen the market upheavals as well. So this novel concept should be looked at. I don't really know about dethroning the large cap funds, but let's see. Let's just wait. You can start out with taking a satellite approach to these funds first, and let's see what future holds for them. जी, और इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछिए अपना.
सर हमारा प्रति इन्वेस्ट करने का फायदा से सोना चांदी खरीदने में या बताने या बैंक में एफडी करने में तो जो खास करके उन लोगों के लिए जो फिर रिटायर हो सकते हैं या होने चाहिए उनके लिए अभी सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? Have you got the questions there? Right. So, अनिल जी, जितना मैं समझ पाई हूँ आप जानना चाह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन या रिटायरीज के लिए सबसे अच्छा फंड कौन सा है. अगर आपका क्वेश्चन यही था तो हम जैसे अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि एक हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिनका नाम होता है इक्विटी सेविंग्स फंड. जहां तक फंड के नाम की बात है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इस कैटेगरी में एक्सिस इक्विटी सेवर फंड देख सकते हैं या फिर मिरर एसेट इक्विटी सेवर देख सकते हैं. एक कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड भी है जिस पे आप नजर डाल सकते हैं. और जैसे मैंने पहले बताया था ये फंड एक 1/3 पैसा इक्विटी में रखते हैं. तो ऐसा नहीं रहता कि आपका कंप्लीट पैसा इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, थोड़ा सा लगा रहता है तो वहां से आपको उनके ऑफकोर्स डाउन्स का भी खतरा रहता है, बट वो थोड़ा लिमिट हो जाता है बिकॉज जो आपके पास बाकी का पोर्टफोलियो है वो डेट टाइप का बना होता है जहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर इंटैक्ट रहता है. बट जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसका थोड़ा फायदा आपको होता रहता है. और ऐसा टाइप का फंड हेल्प करता है जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें से निकालते रहते हैं, इक्विटी आपको ग्रोथ प्रोवाइड करता रहता है. So, Sneha, where is the need from a investor's point of view to have, factor-based funds, to have XYZ-based funds? Aren't we happy with small, large and mid-sized funds and just talk and stay in them instead of get into factors and what have you? Right. So, actually for investors, it has been a simplified arena as of now, but for AMCs it seems it does not, because since reclassification hit AMCs, they were restricted to come up with one kind of fund in these diversified or let's say large, mid, small cap categories like you mentioned. And at the end of the day, of course, it is about giving opportunities also to investors, but then AMCs are at the end of the day into making, it's a money making business for them, right? And where they see kind of value or unrestricted zone when it comes to coming up with new funds, these are basically sector and thematic and passive domain where there is no limit set by SEBI. So therein we are seeing a lot of these kind of funds coming in, and bull market becomes like a crazy area for AMCs to come up with because that is easier to attract investors. That is why the investor interest in terms of money, if I have to quote a particular number, our analysis actually shows that the equity money that has been raised since 2024 Jan, it is actually 80% going into thematic funds. So that is because only those kind of funds are coming in. And retail investors generally should be mindful of the fact that, as I mentioned, first cater to your core portfolio, wherein as of now, or the history suggests that your large, mid, so that small... is the crux. Right, that remains the crux. Yeah. Okay. और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं आरएस धैया. धैया जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. प्लीज सवाल पूछें. सर नमस्कार. जी नमस्कार. सर मेरी एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है to give me advice on these two schemes, Bank of India Flexi Cap Fund, JM Flexi Cap Fund for investment for a period of 5 years. And my second question is, I invested in 4 AMC schemes 2 hours before the 3 p.m. time, and out of the 4 AMCs, 3 AMCs gave me same day NAV and 1 AMC gave me NAV of next working day. So I want to lodge a complaint that why the 4th AMC did not give me the same day NAV, and they are saying that we realize the money later on. It is their problem, it is not the problem of investors. Okay. Right. So taking your first question first, the funds that you mentioned are Bank of India Flexi Cap and JM Flexi Cap. So pertaining to BOI Flexi Cap, that is not a very, I would say, old fund. It has been somewhere around 4 years that this fund came in. But it has been a blockbuster in the time that it has been here. More specifically in the last 1 year, it has been delivering a staggering near about 60%. So that choice is a decent one. I won't say it is a blockbuster kind of fund because the fund really hasn't seen a complete market cycle. As of now, I feel that
you can continue investing in it but I really would like to mention that keep investing in it for a long haul, given that it is an all equity fund. Coming to JM Flexi Cap, again, like I mentioned, this has been there for a while now, but in general, funds from JM Financial as a mutual fund company have been doing pretty well, and the same goes for this fund, delivering a 62% 1 year return. But this one also is a decent fund, and you can maybe continue holding it. The second question, like you mentioned, that you received the same day's NAV for 3 AMCs, but not for the fourth one. So, actually the rule says that they can only give you the NAV once the money is credited to their account. The new rule says that. Maybe they wouldn't have received the amount, and that is why you couldn't get the benefit of the same day NAV. As far as lodging a complaint goes, if you are in touch with their customer care or the managers that you deal with, the relationship managers, maybe those can be helpful. But also you can maybe check with on the AMFI website if there is a area where you can lodge these kind of complaints. जी बिल्कुल। और नजर डालते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। सितंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इक्विटी बाजार में 57,359 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये इस वर्ष में किया गया अब तक का सर्वाधिक निवेश है। ऋण बाजारों में 877 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे इस महीने में भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 58,236 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये निवेश भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार 3 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद किया गया है। इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वर्ष 2024 में अब तक एफपीआई द्वारा इक्विटी में 1,245,000 करोड़ रुपए और डेट में 1,09,285 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today stressed that Brand India is as important as Make in India, and any product made in India should be recognized world over as a good quality product. Interacting with CEOs of PLI beneficiary companies in New Delhi, the minister urged them to move towards sustainable and world-class quality products through the PLI scheme. Mr. Goyal said production-linked incentive is one of the most successful programs that the Narendra Modi government has launched under the Make in India initiative. He expressed confidence that investment of more than 2 lakh crore rupees will be seeded through the PLI scheme. He lauded the CEOs for their investments and job creation, saying that PLI scheme is government's response to the growing dependence on imports in several sectors. The minister emphasized that quality, sustainability and branding India can transform India's future and make India a manufacturing hub. जी स्नेहा जी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ रहा है भारत में, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, किसी भी टाइप का निवेश जब आता है इंडिया में, वो रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो रही है। और अगर हम ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी देखते हैं जो आरबीआई निकालता है, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है। Then we are actually seeing a pretty buoyant IPO offering as well. The IPO market has also been going well, and seems like the country's inclusion in global indices also has been working pretty well. जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। स्नेहा जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए और सभी की आर्थिक जिज्ञासाओं का समाधान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर। Make in India initiative has turned India into a manufacturing hub, says Prime Minister Narendra Modi. Foreign investors pump in over 57,000 crore rupees into the Indian equities market so far in September. And Commerce and Industry Minister Piyush Goyal stresses that Brand India is as important as Make in India. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.